Hey guys, what's up? Hi Sare. Welcome you all to this amazing course. What are we going to discuss today? Very important, indeed, an amazing course. So I hope you all enjoy environment and ecology. Can all of you quickly write why? If you can hear me, if you can see me, just quickly write why. Chalu ho jao, so that we can get also started here. And it's going to be an amazing 1 hour session with you, and it will be like a perfect session. And environment and ecology is my strongest suit. All right. तो वैसे तो सब कुछ पढ़ा देते हैं हम बट environment and ecology is something which is very close to my heart. I've been studying it since 2006 when I was in 11th class in 2006 because it used to come in lot on AIMS exam and NEET exam. अभी भी आती है, तब भी आती थी. Biology NCERT, 12th class NCERT, last 4 chapters are completely dedicated to the environment and ecology. And yeah, so like I'm pointing again and again, it is a very important section. And before 2013 it was not so important section, but when I started my exam preparation in 2012 2013 it became a really important section. ठीक है, तब से तो अब तक ये बहुत ही भयंकर तरीके से रौद्र रूप धारण कर चुका है. तब तो 33 क्वेश्चंस भी आ जाते थे इससे. Now they have not stopped, they're not asking like 33 questions, but they ask around 15-20 questions. We will see. Obviously it is not possible तो है नहीं, right? ऐसे बता पाना कि ज्योग्राफी है कि एनवायरनमेंट है. थोड़ा तो ओवरलैप होता है, राइट? साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, पता नहीं चल पाता. ऑलराइट, सो नो वन इज वेरी श्योर कौन से टॉपिक्स है, तो प्रीलिम्स ब्रेक डाउन करना उतना आसान नहीं होगा. बट आई कैन रेस्ट अश्योर्ड anywhere between never less than 12 questions have been asked, 11-12 questions, and maximum like 29-33 questions have also been asked from this. All right, yes, I will teach you from zero and I'll make you a hero. This is a complete course. Obviously complete course does not mean complete current affairs. It is impossible to cover current affairs completely, but I'll try to cover 80% of it. All right. This is for prelims, mains, interview, your marriage, trip to Mars, wherever you want to study environment, it will help you. ठीक है, so it doesn't matter. Right, प्री का है, मेंस का है, शादी में है, मार्स में जाना है, कुछ भी करना है, मंगल में दोष है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है. कोई भी एग्जाम देना है, कुछ भी करना है, it will always help you forever and ever. Environment is the best, forget the rest. 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं. मैं चाहूंगा कि आप उनमें से करीब 13 से 17 क्वेश्चन सही कर दें. ठीक है, 80% हम टारगेट करेंगे उसका. एंड we'll discuss syllabus, importance, weightage, trend analysis, strategy, some approach. Though you don't need any books, but because people will keep on doing this irritation to me that please tell me which book, 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 which book. So that's why this section is included here. Otherwise you don't need any book. All right. कुछ लोगों का होता है, परेशानी होती है बचपन में, कुछ हो जाती है चीजें, तो they keep on saying कि सर 17 बार तो पढ़ लिया, 18 कौन सा पढ़े हैं सर, 25,000 बार रिवीजन हो गया, अब क्या करें. सो दीज आर प्रॉब्लम्स which can never be resolved. All right, which book, which book, ये कभी जाती नहीं है प्रॉब्लम. All right, ये चालू हो चुके हैं दिव्यांशु गोयल साहब, और बिल्कुल स्पॉट ऑन पहला ही प्रश्न पूछ लिया गया है, ये बुक की ये बुक. अरे बता तो रहा हूँ, ये कोर्स पढ़ लो, बहुत है यार. फिर चालू हो गया, आप बुक्स पे, बुक्स बाद में पढ़ेंगे, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फिर, आप मैं गधा हूँ जो आप बुक से ही पढ़ लो ना, फिर मेरा क्या करना है यहाँ पे. Anyway, so let us get started with syllabus, importance, weightage, trend analysis, strategy, approach, and ideal scenario notebook, etc. So importance of the subject in examination. What determines the importance of the subject in examination? What determines the importance of the subject in the examination is the number of the questions which come from that subject in the examination. Do you agree? What determines the importance of the subject in the examination is the number of the questions which appear in the examination from that particular subject. Right? Everything else is useless. Let's say I love environment and you might hate environment, but why are we studying environment? Because questions come from environment. Not that you care about global warming and greenhouse gas. I know you should do that because there is only one Earth as far as I know. There are a lot of exoplanets, there are a lot of Earth-like planets, but they are pretty sure they are devoid of life. So you just have one Earth. Overall level pe, yes, we should be concerned about. Abhi, I went to Delhi recently, and when I was landing, I could not see whether I was landing on ground or not. Do you understand? That is the level of haze it was. I could not see whether I was landing on ground or whether I was landing in a volcano or whether I was landing on sea. I have never seen such a level of pollution in my life. Okay, I could not see.
Yamuna pic is not viral this year. Yamuna pic I have been seeing since I was an MBBS student. Yamuna has been gone case for a long period of time now. It is not yesterday's phenomena, but I've lived in Delhi from 2008 to 14. Never did I see such a huge haze. All right, never even in the single 6 years, not even a single day for 2000 days I saw that. Yamuna has already been a gone case. Is it clear? If you see National Green Tribunal's old case, if you see Art of Living case, all these cases, you will realize that Yamuna is always a gone case. So let us get started. Importance of the subject in the examination is determined by the number of the questions asked in the examination from that particular subject. 15 to 20 questions आते हैं सर. अब कई लोगों की खुजली हो रही होगी अभी से कि सर बता दो 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 बता दो. तो पहले आपको बता देते हैं 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 बता देते हैं. ठीक है. तो 16, 18, 21, 29 हमारे टाइम पे छक्के मारने लग गए थे यूपीएससी. दिस आई एम एब्सोल्युटली एक्सक्लूडिंग ज्योग्राफी. ऑलराइट, दिस आई एम एब्सोल्युटली एक्सक्लूडिंग ज्योग्राफी. एक ग्राफ में आपको सब लाइफ में लोड खत्म हो जाएगा. इजंट इट? देखो ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं. अगर आप देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. राइट, नॉट इंक्लूडिंग ज्योग्राफी इन इट. देयर कैन बी लाइक लिटिल ओवरलैप हियर एंड देयर, because you never know whether the question is of science and technology or geography or environment and ecology or disaster management or current affair or government scheme. Right, there is always a huge overlap between these topics. But the point being, sir, having all said and done, 15 to 20 questions are asked from environment and ecology. It can be make and break for your career. Yes or no? Should we prepare running notes? I challenge you to prepare running notes when I start speaking, sir. It is impossible. It is not possible to make running notes when I talk. Okay, that I can guarantee you. You can't even listen to it while forget about making notes. It's impossible to make notes in your mind while I am speaking. So it's a futile exercise. It is a futile exercise. It's a wasteful exercise to even think or even fathom or even comprehend the art of making running notes in my classes. So it's great that you download these PDF later on and be happy and be merry. All right. दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो सकता है, मेरी क्लास में रनिंग नोट्स लेना इम्पॉसिबल है. ठीक है. These are the kind of मुहावरा people will get. Okay. कुत्ते की पूछ नहीं रहेगी, अब सब दिल्ली का पॉल्यूशन बन जाएगा. 14 साल के बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा. All right, these are the people. I think these are the examples which you are trying to people will start giving. This is a very sad scenario. Okay, then UPSC syllabus, prelims and mains. Pre का कोई syllabus नहीं होता. Is it absolutely clear? I've never seen any syllabus of prelims examination in last 6 years. Any teacher who tries to explain you the prelims syllabus is absolute nonsense. There are only 8 points which are written. Okay, there is nothing in prelim syllabus. The syllabus is only of mains. Is it absolutely clear? There is no syllabus in prelim. There is only syllabus of main. उसमें एक word लिखा है general science. मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता general science का. Alright, कुछ detail में describe करो भाई क्या. Breakdown of the syllabus, then trend analysis, prelims and mains. I just showed you trend analysis, right? तो आज के बाद कभी कोई पूछे कि क्यों पढ़ना होता है, तो this is the reason why. Can you remember? Can you remember that? All right, all right, all right, all right. 16, 18, 21, 29, 22, 24, 14, 11, 21. Okay. So on an average we can assume that 1/6 of the paper will come. All right, just like every 6th person in the world is Indian, every 6th question in UPSC is from environment. Okay, just like every 6th person in the world is Indian, every 6th question in UPSC is from environment. एक साथ दो चीजें याद करा दी सर आपको. India constitutes roughly around 17-18% population of the world, and environment and ecology contribute 17 to 18% paper of the UPSC preliminary examination. We are not yet into the mains examination. All right. ठीक है. And every 6th Indian is from Uttar Pradesh. ठीक है. All these 3 examples are perfect. So every 6th person is in India is from UP. Every 6th Indian, every 6th human being on earth is from India, and every 6th question from UPSC is from environment and ecology. All right. Then books and resources. This is the book, this is the resource which you are supposed to study. But as I told you, which book is it's a bacteria which infects some people. All right, it's a bacterial infection which is called as, sir, what next? Which book? Sir, what next? Which resource? Which book? All right, it's a very dangerous infection which cure are yet to be found. You have to basically cure it yourself. All right, so please remember that it's a very, very dangerous infection, that unless you study book, you are not able to sleep properly, you're not able to eat properly, you're not able to go to washroom, you get constipated. You need to restudy books. Somehow there is an addiction to books. थोड़ी बस किताबों के पन्ने के हाथ लग जाए, कुछ कुछ हो जाए, कुछ कुछ मजा आ जाए. Okay, it's a very bad addiction. Go away.
All right, then strategy and approach will cover. Importance, it started gaining importance from 2013. Can you see this graph? पहले 10-11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछे, कोई बड़ी बात नहीं थी, चल जाता था, बट एकदम से 2013 से कैन यू सी दिस लाइक 21 22 21 22 24 29 21. So this is because Indian Forest Service also started in 2013. Right. मेरे टाइम से चालू हुआ था, ठीक है. So the combined forest service, अब आपको हर बैंड बजा रखी है एनवायरनमेंट की, राइट. 999 इंडेक्स टच करा दिए साहब, बियॉन्ड इंडेक्स चली गई दिल्ली. दिल्ली बियॉन्ड इंडेक्स. जिसने इंडेक्स बनाया था उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी 999 होगा. ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? So they never thought in their wildest dream that this scenario can happen. Okay, but they forgot the power of Indians, right? We can reach 1.3 billion people, 1.4 billion people, 1.5 billion. किसने सोचा थोड़ी था. So because of global warming, climate change, deforestation, it is very pertinent, it's very important on the part of the UPSC to select civil servants, the future civil servants which are sensitized and which are digitized enough to find the solutions to these environmental problems, right? Right. You have to talk like that. Okay, if you want to get marks, you have to speak like that, you have to write like that. Prelims examination syllabus is farji. All right, it is absolutely farji. Can you see this? It is absolutely farji, right? General issues on environment, biodiversity, climate change. It does not require subject specialization, but this is a very wrong statement. You need to be bloody specialist, all right? वरना आप एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओगे, वहां पे बोलोगे साहब आपने तो बोला था सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए ही नहीं, साहब आप ऐसे घटिया क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो पर घुस घुस के. वहां पे क्या बोलोगे? सिलेबस में लिखा है डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. भाई जितनी पॉलिटी आपको पढ़ाते हैं, आप बैचलर्स पास कर जाओगे पॉलिटी में, डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ा बहुत और पढ़ लोगे, बीए पास हो जाएगी आपकी, राइट. कोई भी पॉलिटी स्टूडेंट होगा, जितना टाइम आप इतना देते हो उतना वहां पढ़ लोगे तो टॉप कर जाओगे कॉलेज. ऑल राइट, तो आपको पता है कॉलेज में क्या करते हो आप पॉलिटी में, राइट. तो वही गवर्नर वाला सीन कर दिया 356 आर्टिकल की तरह, प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज. अरे फिर लिखी क्यों पहली लाइन जब और अदरवाइज लिखी दिया तो, गधों. एनीवे, so let us get started. Environmental ecology, biodiversity, climate change, isn't it? So it has to make some logical sense, right? If the president can do it on discretion, so you can do it, right? So environment and ecology, biodiversity, climate change, current affairs related to biodiversity, conservation efforts, development in the field, etc. This is farji, right? It doesn't make any sense. This syllabus is useless. It is as useless as it gets. नाम में environment ecology लिख दिया. It's like study polity. How does it even matter, right? I know I have to bloody study polity. उसके अंदर क्या पढ़ना है बताओ ना. Anyway, now let us see. This is good, right? This talks about specific crap means. So geographical features, their location changes in critical geographical features, including water bodies, ice caps, flora, fauna, and the effect of such change. Perfect, right? Syllabus you have to follow, ma'am, but you have to follow main syllabus. That is the point which I am trying to make. Lot of educators across the country and coaching center guys, they spend one day on prelim syllabus. I have no clue what they teach in this one day. What is there in prelim syllabus? It will finish in like 10 seconds. All right, there is nothing in the prelim syllabus. Rather, you should go to syllabus and for preliminary examination. If you want to go for that, go through the previous year question papers. All right. So GS paper 3, conservation, environmental pollution, degradation, EIA. All right, environmental impact assessment. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे आप डालो. अरे आप रात को 2-3 बजे और आते तो और एनर्जी मिलती. जैसे जैसे निशाचर हैं हम, ओके, हम निशाचर की श्रेणी में आते हैं. जैसे जैसे सूरज दूर जाता जाता है उतनी उतनी एनर्जी हमारी बढ़ती जाती है. जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है तो हमारी एनर्जी कम होती जाती है. ऑल राइट, सो इंजीनियर हो क्या सर? नहीं यार, डॉक्टर हो. एनीवे, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, EIA, EIA. ऑल राइट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. ऑल राइट, इस पर डायरेक्ट आपके 15 से 20 कीवर्ड बनते हैं, राइट. अगर मैं एक लेक्चर लूंगा आपका EIA के ऊपर, उसके 15, 20, 25 कीवर्ड बता दूंगा. उस जब भी कोई पूछे उसको वॉमिट करके आ जाना, राइट. तो आपका कभी भी 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन फंसता है तो बस वो याद कर लेना. दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड. एब्सोल्युटली. डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो डायरेक्ट लिखा है ना भाई लोगों ने, ऐसे छुपाया नहीं है. डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, दो अलग अलग टॉपिक बनाए और हर साल एक क्वेश्चन डालते ही डालते हैं इसमें से, राइट. छोटा सा टॉपिक है. Now let us talk about breaking down the syllabus.
सो बेसिकली जो हमें पढ़ना होता है वो इतनी होती है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से चालू करेंगे। सर, हाउ टू स्पीक एज फास्ट एज यू, इट इज ऑल्सो डिजीज, यू कांट गेट दिस डिजीज, ऑलराइट, either you're wired that way or you're not wired that way. It's not possible to speak non-stop like that forever and ever. Yeah, obviously you can increase the pace as and when you go, if you can memorize a lot of content, but speaking like that without anything is like slightly tricky. I will not suggest to speak like that. It will have absolutely no consequence whatsoever. People will not be able to understand it and they'll brand you a fool, right? So it's not even a great skill to have. That's why I talk most of the time very slowly, right? So ecology and ecosystem की बात करें तो concept, meaning, properties, all right. Ecosystem, its functioning, systems analysis approach, how to understand it, then types of ecosystem. So basically we will try to cover terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. But if I talk about biomes, then biomes are by and large, biomes we talk about land, right? So biomes talk about land, they don't talk about the water, despite the fact 70% of the earth, rather 71% of the earth is covered with water, right? So environment pollution, okay, types of environment pollution, genesis of environment pollution, causes of environment pollution, and effect of environment pollution. I'll dedicate 4 to 5 hours in covering the contemporary issues from 2018 to 2019, all right, and relative future challenges, and then finally environment impact assessment. ठीक है, so this is the I can't speak like that for a long period of time anyway, so आपने काफी हंस लो सर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो चलो पढ़ लो यार, अब हो गया एंटरटेनमेंट। बायोडाइवर्सिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ऑलवेज रिमेंबर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ऑलराइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच यूपीएससी लव टू आस्क, ऑलराइट। कभी टीकेडीएल पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ पूछता है। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी इन Mexico not so important, all right. Brief of biodiversity in India. I take 1 hour class because I think 1 ghanta is a good enough period of time to entertain you. If I extend it, then you will get bored, right? It's for you guys. So brief of biodiversity in India, extent of endemism of biodiversity in India, all right. Legislation on biodiversity in India, flora and fauna in India, Wildlife Act of 72, Environment Act of 86, Zoological Survey of India, Botanical Survey of India, okay. Then marine organism, protected global areas, organization efforts, impact of climate change, protected area network, biosphere reserves, national park, wildlife sanctuary, botanical garden, conservation efforts, NC2, XC2, concept of sustainable development. इसमें काफी एक important वो क्वेश्चन उभर के आता है आपको, ये जो आप लोग भी कर रहे हो ना कंपैरिजन टाइप, इसमें काफी एक वो आता है, मतलब if you want I can tell you the story, it's quite funny actually. So तो आपने बोला ना वो 2.5 घंटे पढ़ाते हैं, आप 1 घंटा पढ़ाते हो, तो क्या होता है, कई लोग ऐसे ही कोई टॉपर स्ट्रैटेजी सुन रहे थे, तो एक ने बोला कि मैं रोज 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, बट मैं आराम से 2 से 3 घंटे प्ले स्टेशन खेलता हूँ डेली बेसिस पे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक ने बोला मैं रोज 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, बट मैं आराम से 2 आवर्स आई बेसिकली लेट्स से go out, all right, you understand? So 2 to 3 hours PlayStation, 2 to 3 hours go out, 8 to 10 hours, 2 to 3 hours I watch movies. So if you tend to, one of the aspirants started copying the second part, all right, that rank 1 did 2 to 3 hours of PlayStation, rank 2 to 2 hours of going out, rank 3 did 2 3 hours of movie. So basically the point is that if you copy the wrong thing, then it will be a disaster in your life, all right. And most of the people, unfortunately, they are not honest enough to tell you, yes, they might be playing 2 to 3 hour PlayStation, but this other aspect they are not highlighting enough, all right. And an aspirant who is impressionable, they will copy the second part, all right. Let us say if I say I don't make notes, then I also need to tell them that my memory is so strong that I don't need to make notes, you understand. But वो साहब दूसरा पार्ट तो खा गए टॉपर साहब, पहला पार्ट बकवास कर दिया, ऑल राइट। तो अब आप वहां पे लट्टू हो गए, सर फलाना ने तो नोट्स नहीं बनाए थे, उनकी तो 3rd रैंक आ गई।
So you can't be copying the wrong stuff. All right, let us say recently there was a topper, right, rank 1 2 3 years ago. So like last 5 years she was preparing. So 5 years, do you understand the difference? कुछ लोग बोल देते हैं कि मैं तो 2 महीने पहले ही पढ़ा था प्रीलिम से और उसके सिलेक्शन हो गया, बट दे डोंट टेल द बैक स्टोरी दैट they are Bonvita quiz contest winner, they have studied all the NCRTs, they have done everything. It is the first time they are giving mock test. So it is very important not to copy the wrong stuff. All right, if you are joining my course, please remember this part, that people do selective copying. All right, it's like saying कि माइकल फेल्प्स से मैं मिला था अभी सिंगापुर में 1 साल पहले, उसने बोला कि मैं 10,000 कैलोरी खाता हूँ, and I start copying that, I'll become 300 kgs. Okay, do you understand? And he is the one of the most fittest person I have ever seen in my entire life. So I can't do selective copying. Then I have to swim also for bloody 4 hours a day. All right. फिर वो मछली जल की रानी बन जाऊंगा मैं. All right. So the point is that you can't do selective copying, right? Let us say he says that I am becoming such a successful person. I have more gold medal than many countries in the world because I eat 10,000 calories a day. And I exercise for 4 hours in water swimming, and I do gymming for 3 hours extra. Right. So जो एंड वाला पार्ट तो खा गया, क्योंकि उसको पता था कि भाई अंडरस्टूड है, ऑब्वियसली मैं 10,000 कैलोरी खाता हूँ तो बर्न भी करता हूँ, राइट. बट कई लोग नहीं समझ पाते, उस चीज को फंस जाते हैं. तो डोंट डू रॉन्ग कॉपिंग. ऑल राइट, कि वो 1 घंटा पढ़ाता है, आप 2.5 पढ़ाते हो, वो 2 पढ़ाता है, आप 1.5 पढ़ाते हो, वो 5 घंटे पढ़ता है, मैं तो 15 मिनट पढ़ता हूँ. तो पूरा कॉपी करना होता है कॉन्टेक्स्ट में. अनफॉर्चुनेटली नो वन हैज टाइम एंड एनर्जी टू एक्सप्लेन यू द कंप्लीट थिंग. ऑलराइट, and this is the single most reason why people are most of the time not so successful in their life. They end up becoming failure because they do selective copying. All right. So climate change and its consequences, concepts, impact of climate change on Indian subcontinent and the world. Can you see this? This is very, very important. Impact of climate change on Indian subcontinent and world. For UPSC, India comes first, world comes second. Is it clear? Is it absolutely clear? India comes first, world comes second. I'm telling you a generic rule across UPSC. पहले इंडिया पढ़ो, फिर वर्ल्ड भाड़ में जाए. टाइम मिले तो पढ़ो. Okay. Despite the fact the world goes to crap, then India is also part of the world. But you don't need to care about the world because you are Indian civil servants, right? You're not like global civil servants. So ocean acidification, ozone depletion, very, very important. And what can be the possible adaptation and mitigation strategy, climate change vis-a-vis developmental issue? This is also a huge theme, all right. Essay writing के लिए, मेंस के लिए बहुत important theme होती है, climate change vis-a-vis developmental issues. Should we stop using coal when we know for a fact that it leads to greenhouse gas? All right, all right, all right, all right. Do you think? Do you think? Do you think? Do you think? Should we stop using coal because it leads to greenhouse gas? Why don't we stop using coal? I told you a holy trinity, right? मैंने बताया था ना आपको, गांधी जी के 3 बंदर बताए थे ना, ऐसे याद हो तो आपको किसी क्लास में तो बताया ही होगा पक्का. So this is my favorite topic, so I always talk about this. Right. एक थी सोसाइटी, ऑलराइट, बताया था ना आपको. एक था आपका फाइनेंशियल इशू यानी कि इकोनॉमी, ऑलराइट, और तीसरा आपको बताया था एनवायरनमेंट. ऑलराइट. इट्स लाइक सेइंग कि साइबर अटैक होते हैं तो हैकिंग हो जाती है, तो कंप्यूटर से बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो. फिर इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई करंट लग के मर गया तो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं फिर तो, राइट. एंड एवरी डे इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ कार एक्सीडेंट्स, फिर तो कार भी बंद कर देते हैं, राइट. और फिर सो मेनी पीपल हैव डाइड इन फ्लाइट्स, तो फिर फ्लाइट्स भी बंद कर देते हैं. सो मेनी पीपल हैव डाइड इन स्पेस गोइंग टू, फिर स्पेस भी बंद कर देते हैं. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर? देयर इज नेवर एंडिंग. वो फिर आपको ले जाके छोड़ेंगे 20,000 साल पहले. ऑलराइट, ठेठ 20,000 साल पहले डाल के आएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी काफी लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज इट लीड्स टू सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन हैज किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, राइट. सो लेट्स गो बैक टू द हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी. ऑलराइट, वो परफेक्ट है. वहां पे आप 18 साल में वैसे ही मर जाओगे, तो कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है. Isn't it? So that is a perfect example. So if it is not environmentally sustainable and economically viable and societally acceptable, the process will not be sustainable. क्या बोल दिया साहब, फिर से बताते हैं. Any process to become like truly sustainable, all right, it has to be economically viable. Is it absolutely clear? It has to be societally acceptable. Is it absolutely clear? And it has to be environmentally tenable for it to be called as sustainable. थोड़ी भारी अंग्रेजी बाद में बात करेंगे, बट मुद्दे की बात ये है,
अच्छा, कोयला सस्ता है, बिल्कुल साहब, इकोनॉमी में तो चल जाता है, सोसाइटी को एक्सेप्टेड है, हाँ साहब बिल्कुल चल जाता है, एनवायरनमेंट में कोई बहुत ज्यादा डिजास्टरस इम्पैक्ट है नहीं है साहब, तो चलने दो चलने दो चलने दो, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 बॉक्सेस तो टिक हो ही गए, या तो फिर चलने दो। डू यू अंडरस्टैंड? लेट अस से सोलर एनर्जी की बात करें, एनवायरनमेंट बिल्कुल साहब बहुत बढ़िया है, सोसाइटी में चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा, इकोनॉमिकली वायबल है, नहीं, एब्सोल्युटली नो, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सो नॉट सस्टेनेबल। तो इकोनॉमिकली सस्ता करो सस्ता करो सस्ता करो तो सोलर एनर्जी चलेगी, राइट? यू अंडरस्टैंड? एंड यू कैन अप्लाई दिस मैट्रिक टू एनीथिंग इन लाइफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो यूज दिस गांधी जी के 3 बंदर, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ऑलराइट, let us talk about another thing. Do you want me to tell you about it? You want me to tell you about it? स्वच्छ भारत अभियान is a perfect example of this गांधी जी का 3 बंदर। 1947 से 2014 के बीच में भारत सरकार ने काफी प्रयास किए कि लोग खुले में शौच ना करें। Open defecation should be uprooted in India so that toilet are made. Is it environmentally great? Yes. Is it economically viable? Perfect. Is it societally acceptable? No. Society does not accept it. Society does not want toilets in their house. Society feels it's a bad thing to have toilets in their house. So then you have to change the mentality. You have to again invoke Gandhi ji. 2nd October 2014, 145-year-old Mahatma Gandhi, what would have said to you? Oh my God, my India is so dirty. I was cleaning toilets in South Africa 150 years ago. What are you doing, my fellow Indians? So in my 150th anniversary on 2nd October 2019, I want all the villages to have toilets in their house. Oh my God, महात्मा गांधी सोसाइटली एक्सेप्टेबल, चालू हो जाओ चालू हो जाओ, 5 साल में बना दिए। Isn't it perfect? Perfect example of a real life thing. 1947, सन 1947 से भारत सरकार ने आजादी के बाद 2014 तक निरंतर प्रयास के बावजूद भी खुले में शौच की जो समझ गए ना आगे, we can continue go on and on, but that is not the point. I hope you will utilize this framework very well. You need to be like eloquent speaker, whether it's Hindi or English, तभी आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। You can do both this languages, all right? Anyway, so let us get started. India and climate change legislation and missions. All right. Global climate change related organization and schemes. Very, 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 very important. Okay. Biosphere, very, very important as an ecosystem. I told you it's only about land, right? Did I tell you about that? Biomes only means land. So we will be focusing only on land, the 29% of the earth in this case. Biogeographical realms, hydrological cycle, circulation of matter, बायो जियो केमिकल, तो 3 कंपोनेंट होते हैं, वो अच्छे से बताऊंगा। ट्रॉफिक, ट्रॉफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? देखो, इस कोर्स के बाद ना तो आपको कोई बुक की जरूरत पड़ने वाली है थ्योरी में, ना ही आपको कुछ जरूरत पड़ेगी स्ट्रैटेजी की, सब हम ही यही यही निपटा देंगे सब कुछ, ठीक है? तो जो अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट होता है, अच्छा बुफे होता है, और स्टार्टर भी बढ़िया होता है, वहाँ की बेवरेजेस भी बढ़िया होती हैं, वहाँ का मेन कोर्स भी बढ़िया होता है, डेजर्ट भी बढ़िया होता है, और जब आपका पूरा खाना हो जाता है और आपके गले तक खाना भरा होता है, तो आपको बढ़िया सा पान भी खिला देता है वो लास्ट में, राइट? सो दैट यू कीप ऑन गोइंग टू दैट अगेन एंड अगेन, ठीक है? तो दिस कोर्स विल बी समथिंग लाइक दैट, ऑलराइट? यू आर नॉट जस्ट कमिंग हियर फॉर गोलगप्पा, ऑलराइट? आर यू गोना टीच इन सेम स्टाइल थ्रू आउट? If you have any problem, I can change the style very well. I can change the style very well. So today, students, we are going to discuss meaning and concept of biomes. Very, very important concept. And let me start from classification of biomes, related activities of biomes. Biomes are very important. Biomes important. Okay, important point, important topic. Plant community. We'll discuss plant community. Vertical stratification. We are going to discuss. Please look on the board. Please. Plant community, ecological, biotic succession, plant kingdoms, Australian kingdom, important, very important, Cape kingdom, Antarctic, boreal, boreal meaning like you, sir, who is very boring. No, it actually means north, all right? So this is the teaching style of many teachers. I have been unfortunate enough to study in those classrooms, but you know, right? That's how they teach, right? जो मैंने लास्ट 2 मिनट में बनाया वो आपकी जिंदगी के 25 साल हैं। जो मैंने लास्ट 2 मिनट में आपको पढ़ाया वो आपकी जिंदगी के 25 साल हैं। जस्ट इमेजिन दैट एक बार, ठीक है? नर्सरी से लेके कॉलेज तक ऐसे ही ज्यादातर टीचर से आपका पाला पड़ा होगा, राइट? चलो चालू करते हैं। लास्ट 3 साल के इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ईयर 2016-17 में जो वर्जन 2 का चैप्टर नंबर 5 था,
तो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी था। ईयर 2017-18 में हमने पाया है कि वर्जन 1 का जो चैप्टर 3 था क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर था, और वर्जन जो वॉल्यूम 2 का चैप्टर 5 था, वर्जन वॉल्यूम एक ही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी क्लाइमेट चेंज था, एंड अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इससे समझ में आ गया कि इकोनॉमी इज वेरी इंटरट्वाइंड विद एनवायरमेंट, economy is intertwined with environment, right? Can you see this? Right, one can't go away with another. अब आप 4 साल के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से रहे, और जो बेकार टीचर होगा बोलेगा 4 लिंक पकड़ा देगा आपको, राइट, पढ़ लेना। आपको भी पता है, उसको भी पता है ना, आप खोलने वाले हो ना वो, तो मैं भी वैसा होता तो पकड़ा देता आपको, ये पढ़ लेना। बट हम पढ़ाएंगे आपको, हम इनका जूस निकाल के आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप जूस पी के और वहां पे वॉमिट करके आ जाओ यूपीएससी में, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, ऑलराइट। फिर हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 के बीच में। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। फिर हम पढ़ेंगे नोट्स ऑफ थर्ड रिपोर्ट ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफ एआरसी। और फिर कुछ जो माल बच जाता है लास्ट में उसको बोलते हैं मासलीनियस, ठीक है? ट्रेंड एनालिसिस प्रीलिम्स मेंस में कुछ है नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। एवरी सिक्स्थ इंडियन इज फ्रॉम यूपी, एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम India, and every sixth question in UPSC in preliminary examinations from environment. As you can see, around 20 questions are asked from environment every year for the past few years. Most of these questions are directly and indirectly related to news, contemporary issues, very, very important. All right. It will also talk about fundamental topics. What do you think about 2020 trends, sir? It's an interesting question. मैं क्या क्वेश्चन बना रहा हूँ यूपीएससी के बैठ के? एनी गधा हु सेज दैट इसमें इतने ये आएगा, फलाना आएगा, ढिमका आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। Unless I say that yes, I can safely predict that 15 to 20 questions will come, that's the only thing I can do, right? If I promise you, I guarantee you, then I'm a fraud, all right? I can say that these are more important topics, these are less important topics, but if I say exactly इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो फ्रॉड है, ठीक है? अगर हम मेन सिंस 2013 की बात करें तो कैन यू सी लाइक ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस, 50 नंबर्स वर देयर फ्रॉम 250, ऑलराइट? कैन यू सी दिस? 40 40 50 25 25 37 35, ऑलराइट? सो दिस इज द ट्रेंड। मतलब इस लेवल पे एनालिसिस करके दूंगा ना, अगली बार कोई बोलेगा तो आप मतलब चुप करा देना उसको, ठीक है? सो एज यू कैन सी क्लियरली 50 इज अ गुड नंबर, राइट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। सो ट्रेंड एनालिसिस ऑफ इंक्लूड डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें इंक्लूड कर रखा है, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू डिजास्टर मैनेजमेंट। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? दैट्स ऑलवेज आस्क्ड इन जीएस पेपर, मेंस पेपर 3, and a minimum of 3 questions of around 40 marks is asked. Is it absolutely clear? So, and 2019 environment and ecology constituted 50 marks of the GS mains paper 3. Okay, so this is something which is like very, very important, and this is like you have to remember that at so can you just remember this? So it's a very simple thing which I am trying to make you understand. Okay, so obviously there is a course which I made on YouTube, but this is not needed at all. This comprehensive course by me is more than sufficient. Is it absolutely clear? एंड हिंदू एंड रिलेटेड योजना कभी इधर उधर से आएगी, बस वो पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट? Obviously current affairs is something which I will not be able to cover completely. By definition it is never completed, right? There are different sources, कभी वेबसाइट पे चले गए, कभी विकिपीडिया पढ़ लिया, कभी इधर उधर कर लिया, ये सब कुछ। फिर भी कई लोगों को बहुत खुजली होती है, तो एक NIOS होता है, राइट? नाम सुना है इसका? NIOS, इसका कंटेंट ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू लाइक गो ऑन इट रिलीजियसली, बट कई लोगों को क्या है, वो खुजली हटती नहीं है जब तक एक बुक का नाम ना लो। तो एक बुक अगर आपको खरीदनी है तो एनसीईआरटी के 12th क्लास के लास्ट 4 चैप्टर पढ़ लेना, ऑलराइट? या फिर एनआईओएस का एक मॉड्यूल होता है एनवायरमेंट, तो वो पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है, अगर कुछ खरीदना है, कुछ है परेशानी है लाइफ में, कुछ विच बुक वाला कीड़ा आपको काट चुका है, तो ये 2 आप चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है? बट अदरवाइज आई विल बी कवरिंग देम एनीवे, सो इट्स अप टू यू। सो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रॉपर्टीज, देन इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग, सिस्टम्स एनालिसिस अप्रोच। ओके, यू कैन मेंशन सम बेसिक्स टू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स इन द मेंस एग्जाम, ठीक है? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अगर ये पढ़ोगे और मेंस में कभी वॉमिट करके आओगे तो 1-2 नंबर इधर उधर ज्यादा मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। फिर इसका अगेन लाइक 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी मॉड्यूल 3-4 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन,
कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट इश्यूज, फ्यूचर चैलेंजेस, EIA। EIA अब जैसे आप, मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि जिनको वो दिक्कत होती है, कुछ लोगों को परेशानी होती है, बुक्स कैन बी रिप्लेस्ड completely by an academic classes। Yes, yes, I agree with this statement. If you are following the right educators, yes, you don't have to worry about it. All right. I can personally take my guarantee. Like if you have studied my science and tech course, I have covered everything in NCERT. जो remotely भी कभी पूछ सकते हैं, सब सब कवर कर डाला, ठीक है। सो एनवायरनमेंट में भी ऐसे पढ़ाऊंगा कि ऑब्वियसली 80% ही मैं क्लेम करता हूँ हमेशा। आई डोंट से 100% ऑफ एनीथिंग, बट 80% इज अ गुड एनफ नंबर। ओके, आपको कौन सा प्लूटो पे जाके उसको प्लेनेट बनाना है, मतलब आपको यूपीएससी क्रैक करना है, मस्त रहो, ठीक है। So biodiversity and conservation. So biodiversity, will discuss some concept importance. Brief of biodiversity in India. What is endemism? What is a hotspot? What are the laws? What are the protected flora and fauna, animal diversity, plant diversity? What is the source? Again, you can just go PIB Hindu, Environment Ministry, climate change. All right. NIOS. Ronald sir says cutoff is never 200 by 200. वो उनकी उनकी क्या जरूरत है इसमें, मतलब एनीवन कैन से, मृदुल कैन से, ईमानी कैन से, समीक्षा कैन से। इट्स लाइक सेइंग अर्थ इज स्मॉलर देन सन। मतलब हाँ, मतलब इफ आई से यू से डजंट मैटर, राइट? अर्थ इज, यस, इट इज स्मॉलर देन सन। ओके, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर लेस देन 9 feet इन हाइट। यस, आई एग्री 100%। मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूके स्पीक इंग्लिश। यस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंग्लैंड। तो क्या करना है इसका, इन्फॉर्मेशन का क्या करें हम? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, कंजर्वेशन एफर्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑलराइट। तभी मेरे को कुछ कुछ पॉलिटिशियन से कुछ कभी कभार न्यूज में गलती से देख लेता था बचपन में, तो पूरे दिन भर दिमाग खराब रहता था, क्या है, इसको किसने चूज किया है? ऐसा लगता था किसने एंकर में बना दिया इसको न्यूज में। ओके, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, और घर वाले परेशान हो रहे हैं कि इसको क्या हो गया, मतलब हाउ कैन यू से दैट टू द अदर पर्सन, डू अंडरस्टैंड? बट आई इवन एट दैट एज आई कैन अंडरस्टैंड यार, ये क्या नॉनसेंस कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है। All right. So climate change concepts, impact of climate change, ocean acidification, depletion, etc. ये अब तो देखे भी जमाना हो गया, but yeah. So there is one chapter called as chapter 7 by Majid Hussain, Models in Geography. अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है लाइफ में, किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, भूख लग रही है, नींद नहीं आ रही है, तो ये चैप्टर पढ़ लेना खोल के उस बुक से, ठीक है। बट अदरवाइज यू डोंट नीड टू स्टडी। समझ में आ रहा है ना? सबके लिए नहीं है सोर्सेज, बट कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, उनको मदद की जरूरत है, उनको दवा की नहीं है, दुआ की जरूरत है, ठीक है। तो उनके लिए है बाय माजिद हुसैन, ओनली चैप्टर 7। सर प्लीज पूरी बुक मत पढ़ लेना, ठीक है। गॉड रेस्ट हिज सोल। तो ग्रेट गाय। सो बायोस्फेयर एंड इकोसिस्टम। ऑलराइट। So biosphere is an ecosystem. Again, like this is chapter 40 and 42 of this guy. Again, like not at all important, but फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। Anyway, so this is what we are going to cover, and this is animal community. And this is very very important. Can you just go to this website once? un.org में sustainable development. Just visit this website. It's a great website. Alright, I'll post the link for you. तो मैं पिन कर दूंगा ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है कोई टाइप लोगों से। Right, so this is a great website. It covers a lot of things about it. So whenever you are getting bored, I would strongly recommend you to go here. Okay, it clearly talks about sustainable development goal, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। टेलीग्राम नहीं, UN यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, right? And important chapters of economic survey, you can download it from here. Then economics and geopolitics of economics. This is of environment, sorry. So regular current affairs from any authentic source will do. And Ministry of Environment, Forest website, ecofeminism, all the reports related to environment, the publishing authority, module 8A and 8B of NIOS, National Disaster Management Plan, NDMA, National Policy on Disaster Management Summary. अब तो चैन हो गया, मिल गया, खुश हो लाइफ में। इसके बाहर नहीं पढ़ना है कुछ भी जो मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। अब थोड़ा शांति मिली अंदर के व्यक्ति, हाँ अब ठीक, अब आज अच्छे से, आज कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आज बढ़िया वॉशरूम जाएंगे आपको। So notes of the third ARC report on crisis management, India's key hazards, vulnerabilities. Okay, 12 crisis response mechanism recommendation. Don't ever buy down to earth geography and you, all right, Roman, Saini and friends, ऐसी magazine जो ऐसे नाम होते हैं वो मत खरीदना, ठीक है। So only योजना magazines related on environmental issues, that is what you have to study. Okay, खत्म कब होगा एक और, चालू हुआ नहीं और खत्म करवाने में पहले तुल गए।
अभी तो बोला 25 बार की 50 घंटे का कोर्स होगा। ऑलराइट, कुछ लोग जल्दी और जल्दी, तो मैं जल्दी करवा सकता हूँ बट इतना जल्दी भी नहीं करवा सकता। ऑलराइट, डू नॉट गो फॉर एनी बल्कि मैगजीन्स लाइक ज्योग्राफी एंड यू एक्सेट्रा। ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना शुरू के 1 घंटे में हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। डू यू अंडरस्टैंड? बाकी सब मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कुछ कुछ पढ़ लो, कुछ कुछ करो। बट क्या होता है, हम इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं कि ब्रेकफास्ट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, या इफ यू डोंट स्लीप फॉर 8 आवर्स अ डे यू विल डाई। 4 बजे उठ के सुबह पढ़ना होता है, बुक्स नहीं पढ़ोगे तो सरस्वती जी बुरा मान जाएंगी। ऐसी ऐसी ब्रेन वॉशिंग करा रखी है ना आपकी, मैं क्या बताऊं आपको किस लेवल पे। दैट इज वाई 99% ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम बिकॉज ऑफ द ब्रेन वॉशिंग विच हैज बीन डन अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, ऐसा बोलते हैं ना, किताब को पाँव मत लगाओ सरस्वती जी बुरा मान जाएंगी, मतलब किताब पढ़ो ही मत। ऑलराइट, व्हाई विल अ गॉडेस केयर अबाउट योर बुक? मतलब आप इतने बड़े गधे हो, आप पढ़ते लिखते हो नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपसे? राइट, तो एनीवे, वो अच्छा काम करेंगी ना, इफ लेट अस से शी विल फोकस ऑन बेटर थिंग्स, राइट? शी विल improve the literacy rate of India. Why will she bother about you at individual level? So strategy and approach. All right, so content and environment can be divided into static and dynamic. Most of the questions are asked from dynamic portions, but this trend has changed in last 1 to 2 years. All right, is it clear? The last 1 to 2 years they are again back to static. All right, so static portion includes the content which never changes. Is it absolutely clear? So there is a lot of content which never changes, it never undergoes any change, like basic concept theory, or if it changes it's very slow. All right, so some of this portion has a huge correlation with geography, like national parks, sanctuaries, rivers flowing through them, their climate, etc. All these are important point. Okay, why do you need original PDF? कि जो current PDFs comes in image format, you can just download it from there. So most of this portion requires understanding, rote learning. All right, so it requires clarity. So learn the facts, analyze them, master them. The dynamic portion includes topics which keep changing, right? Isn't it? So learn the facts, analyze them, master them. So this is done. The dynamic portion includes topics which keeps on changing. You have to update from news. So this basically includes a lot of conventions, a lot of protocols. Like recently, USA has started officially getting out of Paris. Do you know that? अभी न्यूज चल रही है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है इस पे. So न्यू ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, न्यू एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. अब वो इतनी लेटेस्ट न्यूज है कि मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकता. अब पॉइंट समझ रहे हो? वो इतनी लेटेस्ट न्यूज है कि वो जब तक वो पूरी डेवलप नहीं होगी अच्छे से, उसका मतलब माल निकल के नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा. अक्षर इज ऑलरेडी टेकन इस क्लास. अभी वो यार लवासना में बैठ के उसको भारत दर्शन करना, तो मजे करना, तो क्या यहाँ. ओके, so correlate the static and the dynamic portion as both are important for the exam. But yes, a strategy course is available, definitely go through it. All right, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाता है वो बंदा. राइट, लाइक ट्रूली ट्रूली ग्रेट गाय. राइट, अच्छा पढ़ाता है. सो subject does not require subject specialization at all. Is it absolutely clear? So the analytical approach is required to solve the questions. Okay, so going through the previous year questions you will get an idea. Down to earth का नाम मैंने मना किया था ना, अभी मत लेना down to earth. अभी मना किया था ना. Don't use this name down to earth. Okay, nothing except Yojana. All right, so don't talk about geography and you in this. Okay, so anyhow, so then again, like obviously it goes without saying, you have to go through authentic resources which I just told you, right? Either go for NCRT or go for NIOS module or sustainable development. Go through United Nations website once in a while. इसमें काफी सारा फॉडर मटेरियल डाल के रखते हैं, ऐसे सिक्का सा घूमता रहता है, कसिनो बना रखा है किसी ने, तो बढ़िया कोई भांग खा के वेबसाइट बनाई है बहुत प्यारी. ऑलराइट, सो आई keep visiting it sometimes. Right now it says Sustainable Development Goal 14. Conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources for sustainable development. Then there are quick links of Sustainable Development Goals, Agenda 2030, Agenda 21, High Level Political Forum, how do you divide Sustainable Development Goals. Then there are like upcoming events, ये वो फलाना stakeholders, and काफी अच्छी वेबसाइट है. Alright, so it's very important to know the official syllabus given the exam. Can you revise your syllabus at least like 10 times a day? Okay, ये जो syllabus है सबसे पहले तो ये पढ़ लेना. Alright, so ये जो ये पढ़ लेना, GS paper 1, GS paper 3. Then read this syllabus at least 10 times a day. Alright,
and then in the next classes I'll cover like previous year question papers. So first of all, memorize them by rote learning or whatever, then memorize these chapters which you have to study from last 3 economic survey. All right, okay. So because economic survey, NIOS, योजना, इसमें क्या है? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट मेरे को कमीशन देती है यहाँ पे बैठ के कि हर योजना पे 2 रुपए मिलेंगे रोमन सैनी को? सो इकोनॉमिक सर्वे, NIOS, योजना, why do I recommend NCRTs etc? Because these are authentic sources. All right, UPSC is also a government body, right? You are also going to try to become a government body, right? And government itself is writing books so that you can crack the exam, so that a government body can write books which are published by government body, so that you can become part of the government. So isn't it important that you go through the government sponsored material, so that whatever you write in the exam hall cannot be denied or refuted, because it has been published by the same body which is appointing the people who are going to select you to become the part of the same body. बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है. So that is why economic survey, NIOS, Yojana, NCRT, they are all government approved. Governments love the way you start courses like first mentioning syllabus then previous year question paper. इंडिया की यही प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि दिल्ली में किसी को पानी मिल जाता है या सांस लेने को मिल जाती है, आहा साहब क्या काम कर दिया, बिजली आ गई घर में, पानी मिल गया, सांस ले लिया. अरे दीज आर द बेसिक्स यार, ये तो होना ही चाहिए. कोई कोई नीदरलैंड में ये थोड़ी खुश होगा बैठ के एम्स्टरडेम में कि हवा मिल गई साहब. आज तो तबीयत ही खुश हो गई शर्मा जी, सांस लेने को मिल गया. मतलब this is like the basic, but teachers are so bad. Teachers are so bad that they don't even remember the syllabus and previous year question papers. So that is why when I'm just literally discussing syllabus, कुछ नहीं discuss कर रहा, मैं बस ये discuss कर रहा हूँ कि ये syllabus है, ये topic यहाँ से पढ़ लेना. ऑलराइट, उसी में लोग ऐसे ओ माय गॉड क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है. ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड्स इतने गिरा दिए हैं लोगों ने. ऑलराइट, because the problem was earlier that teachers who become teachers, they never wanted to become a teacher. That is the sad part. All right, like there are very few people like me who could do other things also, like they can become doctor, they could have been IAS, but they're teaching. So then you basically go for all in, right? So ऐसा थोड़ी कि मैं वही पढ़ाऊंगा नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी उसमें. बट ऐसे लोग जब पढ़ाते हैं तो मजा आ जाता है, समझ रहे हो? And then you can correlate like hundreds of things, how you remember all these things etc. Unfortunately teachers are like so that's how it is, right? मान लो जो जबरदस्ती डॉक्टर बना दो तो अच्छा डॉक्टर थोड़ी बनेगा वो. जो जबरदस्ती इंजीनियर बना दो ऐसा थोड़ी इंजीनियर बन जाएगा. बट अच्छा अंदर से दिल से इच्छा होगा आपको खुश, मेरे को आप जब खुश होते हो कि भाई किसी ने अच्छा पढ़ाया है, तो जो एक अंदर बच्चा है जिसको अच्छे टीचर्स नहीं मिले, उसको काफी अच्छा लगता है कि चलो चलो मेरे को तो नहीं मिले बट सामने वाले को मिल रहा है. दैट इज द ओनली पॉइंट, बाकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी चीज से. So first and foremost, we already covered the sources, etc. So go for it. All right. So and let us cover this. Okay, strategy में you have to go for this. Try to make notes after the class is done. ठीक है. तो जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद एक नोट्स बनाने की कोशिश करना. So be thorough with the syllabus. Okay, that you have to memorize it, ever it. Make a separate folder online diary, क्योंकि कुछ लोगों को फिर से एक ऑफलाइन नोट्स बनाने का कुछ वो होता है, एक बीमारी होती है. ऑल राइट, सो ऑनलाइन बनाओगे तो बहुत बढ़िया, बट कर सकते हो अपडेटेड रेगुलरली. ओके, और पेपर में बना रहे हो तो आधा आधा खाली छोड़ देना, बट यूज वन नोट, एवर नोट, ग्रीन नोट, मेरा नोट, तेरा नोट, जो नोट यूज करना है नोट कर लेना. नोट्स ऐप यूज कर लेना, जो करना है कर लो, बट ऑनलाइन आर ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन ऑफलाइन. विल आल्सो डिस्कस मेंस के लिए थोड़ा रेंज इज ओनली इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा मेंस के लिए. ऑलराइट, so there is no difference between prelims and mains these days. They're absolutely clear. There's nothing which I will teach you for mains which I'll not teach you for prelims. A stupid distinction hota hai. Obviously there are some exams like ethics, CSAT paper 2 which are exclusive to mains and prelims respectively, but by and large you will realize that the topics which are important for the preliminary examination are also important for the mains examination. ठीक है. So UPSC is also checking analytical skills along with facts and concepts in each subject. Alright, I have just realized this last 2-3 years. But again, like keep the resources limited. Don't go deep diving. Alright, वो बिल्कुल गलती से भी मत करना, ठीक है? And जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए उतने पढ़ लेना, तो 80% काम हो जाएगा. Okay. So avoid preparing, rather revise the sufficient number of topics you have prepared very well.
All right, so this is also an important key information which I would rather give it to you right now. So don't read any book whatsoever. Okay, do not jump to advanced sources immediately. Don't forget to stick the following basic formula to save. So this course plus NCRTs plus Hindu PIB Yojana is done. Is it clear? So this course plus NCRT plus Hindu PIB Yojana, it's done. All right. उसमें भी क्या पढ़ना है वो बता दूंगा मैं आपको. करंट आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम करंट अफेयर्स ऑन माय ओन and do not read multiple sources ever. It's the disaster. Perfect recipe for disaster. So limit your resources, read and revise a few sources multiple times, and be diligent in this course. All right. ऐसा लगता है मतलब अगर 100 बच्चे चालू करते हैं कोर्स वैसे तो यू आर लाइक सो मेनी ऑफ यू आर देयर राइट. सो बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को 20 बच्चे देखते हैं अगर 100 चालू करते हैं. 20% पीपल आर देयर इन द लास्ट क्लास. सो ट्राई टू बी इन दिस 20% एंड नॉट इन द अदर 80%. कई लोग बहुत स्मार्ट हो जाते हैं कि यार ये क्या पढ़ाएगा मैं, हमने पढ़ लिया, हमने सीख लिया, तो ये कौन होता है पढ़ाने वाला. राइट. बट आप उन टाइम में पढ़ते नहीं हो, आप नेटफ्लिक्स पे जो नई मूवी आई होती है वो देख रहे होते हो. राइट. आपको भी पता है, मेरे को पता है. या फिर आप हॉस्कास विलेज में बैठ के पिज्जा खा रहे होते हो. ठीक है. तो let's not kid ourselves. You have been there in this 80%. Right now it is time to move to 20%. All right. So please be diligent and please finish the course. Okay. 50 घंटे में सबको पता है 25 साल में आपने सब कुछ कर रखा है. और कुछ करो ना करो, अपने से झूठ मत बोलो कम से कम. ठीक है. दूसरों से झूठ बोलना है बोलो, अपने से झूठ मत बोलो. अपनी नजरों में मत गिरो. ऑल राइट. तो ना इतने भी बेगैरत मत हो कि खुद से ही नजरें ना मिला पाओ. ठीक है. सो ऑलवेज डोंट लाई टू योर सेल्फ एट लीस्ट. ओके. So please remember this. All right. At least be able to look yourself in the mirror. Okay. Do not make irrelevant jottings. और ये काफी लोगों को देखा है, टीचर ऐसे बैठा रहेगा क्लासरूम में, अच्छा है पंखा थोड़ा कम चल रहा है, वो लिख लेंगे फैन इज स्लो. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वो इतना खो चुके हैं नोट्स मेकिंग में, वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. ऑल राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा हुआ है ना, कई लोगों के साथ देखा होगा आपने, नोट्स में कुछ भी बोल देता है टीचर, वो लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, स्टार मार्क भी लगा लेते हैं उसके ऊपर. सो डोंट मेक अननेसेसरी नोट्स. ऑलराइट. एंड ट्राई टू रिवाइज योर नोट्स एट लीस्ट 1 week, 1 month एंड every 6 months. ओके. तो अभी सब लोग हंसते हैं, हंसते ऐसे हैं कि पता नहीं कौन दूसरा करता है. सर हम नहीं करते, ये तो दूसरा करता है. अरे ये हमारे घर में नहीं होता, दूसरों के. अरे तुम ही हो वो. ठीक है. तुम ही हो, मैं भी किया है, सबने किया है. ठीक है. So 1 week, 1 month. Okay. So do not forget to revise your own notes after every 7 to 8 days. All right. And try to make notes after the class. All right. So do remember, hard work will always pay. Always, 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 always. And revise your own notes every 7 to 10 days. Trust and update your own notes. All right. Even when I give you PDFs, I would strongly recommend that you revise some notes on your own. And practice makes a person perfect. All right. I didn't write man and woman. लोग इसमें भी लोड ले लेते हैं आजकल. तो I have written a person. All right. So whether you are man, woman, transgender, it doesn't matter. If you do practice a lot, you will become perfect in whatever you do. All right. So is it absolutely clear? ठीक है सर, हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओके. अपन करते हैं अभी, सब करते हैं बढ़िया से. ठीक है. तो हमने डिस्कस किया है आज सिलेबस. ठीक है. कोई बोल रहा है आज मोटिवेशन क्लास हो गया. अरे मोटिवेशन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ. आई डिस्कस्ड इन डिटेल सिलेबस ईच एंड एवरी टॉपिक व्हिच यू आर सपोज्ड टू कवर. मैं यहाँ पे थोड़ी कर रहा हूँ कि सुबह उठ के कैसे सुबह कोल्ड शावर लो और ये करो. फिर हमने इंपॉर्टेंस बताई उसकी, उसका वेटेज बताया आपको, एग्जैक्ट वेटेज बताया. राइट. कि प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इतने क्वेश्चन आते हैं. लोगों को ये बकवास क्लास लगती है, बोनस क्लास लगती है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास. ऑलराइट. Do you know that most of your life, because you don't know these tricks, do you know you drive your life like a punctured car? अरे 5 मिनट रुक जाओ, उसका टायर बदल दो. 5-10 मिनट ब्रेक लो, उसका टायर बदल दो. जो आप 50 की स्पीड पे उसको खींच रहे हो, वो 100 की स्पीड पे चलेगी. राइट. बट ज्यादातर लोग वो रुकते ही नहीं है लाइफ में, वो पंचर टायर के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. 80-90 साल निकल जाते हैं, वो टायर पंचर का पंचर ही रह जाता है.
हाँ, फिर आप हंस रहे हो, बट वो आप ही हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. डू यू अंडरस्टैंड? मोस्ट ऑफ यू आर स्टक. नो स्किल सेट इंप्रूवमेंट, नो न्यू लर्निंग, नथिंग. रोमन ने बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो फिर से वही सुबह आते ही हिंदू में घुस जाएंगे. ऑलराइट, कि पता नहीं आज कौन सा ट्रेजर हंट है जो सबसे जल्दी खोज के निकालेगा उसको 20 किलो सोना देगा. एट द हिंदू पब्लिकेशन. ऑलराइट. तो मतलब क्या है? Why can't you be smart, do smart work? Don't drive a punctured car, all right? Good UPSC aspirant with bad attitude, bad resources, bad content, bad teacher is like driving a punctured car in a race, all right? You would rather stop for 1 minute and change the car, right? Rather than driving a punctured car. But लोग वो भागते रहते हैं. Okay. Then we discussed trend analysis. Okay. Then we discussed some strategy approach, and even I gave you a point by point books, all right? So it is very simple to remember that whenever you are in doubt ki why you have to study anything at all, so just go for this. All right, you study because UPSC asks a lot of questions. Okay, and in the first class, it was my entire intention was to just to sensitize you that it's a very important topic. मैं इसलिए नहीं पढ़ा था कि मेरे को आता है. ये बहुत ध्यान से सुनना है लाइन. और आप इसलिए एग्जाम में आंसर मत लिखना क्योंकि आपको आता है. ठीक है. एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसको आंसर करना, और मैं इसलिए पढ़ाता हूँ बिकॉज यूपीएससी पूछता है. ओके, so these are very very important points. All right, just because you have memorized it and you want have a very strong urge of vomiting it, don't vomit on examiner. All right, so after the exam hall ends, take some papers and write. 3-4 घंटे बैठ के लिखो. ओके, लिखो बैठ के, तब वॉमिट कर देना बाद में, बट डोंट वॉमिट. ओके. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होगा स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी. इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी. ऑलराइट, डोंट एवर से दैट. ओके, सो आई रियली लाइक स्पेस. दैट इज व्हाट आई डू इन फ्री टाइम. ओके, तो तभी मैं आपको जब स्पेस पढ़ाता हूँ तो आप पागल हो जाते हो कि क्या पढ़ा रहा है, राइट? एनी, तो इसको क्यों पता है कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा है, इसको क्यों पता है कि यहाँ से जस्ट नियरेस्ट स्टार है 4.2 बिलियन लाइट, इसको क्यों पता है कि 10 to the power 16 मीटर होता है, इसको अर्थ का वेट क्यों पता है, इसको अर्थ का सनसेट डिस्टेंस क्यों पता है, ये क्यों पता है इसको, क्यों आई लाइक दैट सब्जेक्ट. ऑलराइट, इट्स नॉट बिकॉज यूपीएससी आस्क्स इट. ओके. तो और कुछ भी किसी को परेशानी हो लाइफ में, दुख है, इसके बाद एनवायरनमेंट में कुछ बचेगा नहीं, और ना मैं कुछ बचने दूंगा. ठीक है. बट स्टिल, एज आई टोल्ड यू, इट इज जस्ट 80%. ओके, एनी टीचर हु सेज दैट 100% क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे, ही इज नॉट डूइंग जस्टिस टू यू. ऑलराइट, सो डोंट लिसन टू देम. 100% क्वेश्चन तो था, ना ही वो हमारा एम है, ना ही वो कभी इंटेंशन रहेगा. बट 80% अगर आपने कर दिया ठीक ठाक, तो लाइफ सेट हो जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट लीव दिस कोर्स इन बिटवीन. हाफ ऑफ द चैप्टर्स विल बी निहायती बोरिंग. ऑलराइट, इज इट क्लियर? Isn't it? Half of the chapters, when I start teaching you wildlife park and national sanctuaries and hotspots, give up हो जाएगा लाइफ से. ऑलराइट, कई बार तो ऐसा लगेगा कि ये छोड़ो, व्यर्थ है, ऋषिकेश चलते हैं और आश्रम में थोड़ा समय व्यतीत करते हैं. ऑलराइट, बट उसी टाइम पे जो डटा रहेगा उसी का यूपीएससी क्रैक होगा. ऑलराइट, so always remember these facts what I am telling you right now. These are like guru mantras. So you will feel like leaving, and 50 to 80% of you will leave also, but those of you who will stay forever. ठीक है. So those of you who will stay, you will have a very good chance of cracking the exam. And always remind yourself you are doing this only to crack the exam. There is no other point for you to do. Okay, so बस ये याद रख लेना, so that you exactly know what has to be done and what needs to be done in this case. ठीक है सर. तो हम अपलोड कर देते हैं आपकी पीडीएफ अब अच्छे से. So and I'll meet you, and it was always amazing teaching you all. So एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से. मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीथिंग मेंस 2013 से पहले कभी मत पढ़ना. इज इट क्लियर? और आराम से निशाचरों की तरह पढ़ाई करेंगे रात को 10:30 से 11:30. ऑलराइट, so just remember that 50 marks was asked in last thing. Okay, it is useful for 2022. Yes, it is useful for 2022. Right, अभी मत भूलना 2042 में इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तब मैं नहीं बता सकता, तब यूपीएससी रहेगा कि नहीं, सिविल सर्विस रहेगा कि नहीं. बट हाँ, अगले 3-4 साल तक के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है. Right, that I can
like say as a fact. Okay. So it was amazing teaching all of you, and thank you, and have an awesome day, and take care, and good night, and I'll see you tomorrow at exactly 10:30 p.m. And till day, take care and good night.